Today we shall study next to it. Okay? Next is one of the most important property which is found only in living being, homeostasis. The word homeo means constant or same, constant or same, and stasis means state, or we can say steady state. That is, all the living beings have an ability to maintain a steady state. Whatever thing is there in their body, they can maintain them in a constant level. They can maintain them in a constant level. What is meant by that? That is, if I say in our body the water is somewhere between 70 to 72%, so it will be maintained at that level only. It will neither go below nor go above. If it is above this, we will urinate it. If it is below this, we will thirsty. So that is the beauty. That is, the living being can maintain their steady state. Whatever number of tissues, whatever number of organs, whatever number of amount of water, whatever amount of glucose, anything by and large our body needs, that is needed in a constant level, and that will maintain between a constant range. Of course, it cannot be exactly 72% or it cannot be exactly 70%, but it will maintain in that bracket. If we have studied the glucose level, it should be ranged between 80 milligram per 100 ml blood, 100 ml blood to 120 milligram per 100 ml blood. The blood sugar level should be maintained between these two ranges. If it is below this, the glycogen will break and add sugar. If it goes above this, the excess of glucose will be converted into glycogen. But the glucose level will be maintained between these two levels. It will neither go up nor go down. यही लेवल है 40 मिलीग्राम का डिफरेंस. 80 milligram per 100 ml to 150 milligram per 100 ml. This will be the range between which the blood sugar level is maintained in our body. Now compare it with your surrounding. Your surrounding never have any such type of mechanism. Your surrounding, whatever type of things are there, they are keep on varying. They cannot maintain a steady state. Okay, man-made thing को छोड़ दीजिए आप. Man-made, like you got a stabilizer in your AC or on your refrigerator or any other precious device that is maintaining the voltage level between a particular range. When the voltage goes up, it brings it down. When the voltage level is low, it brings it up, and it is maintained between that bracket. Similar bracket is found here. That bracket for everything is varying. For water I said, for sugar I said, and the same is for any other thing. Okay, when we know that the adult human being is having somewhere about 5 to 5.5 liters of blood. If due to some reason the blood is lost, then within no time, you might have seen some people donating blood. They are just simply lying and a bottle is attached and syringe is injected into some of the vein and the blood is taken out. And the blood is taken out, that means the blood level will go below 5.5 liter. Say for example 300 ml blood is taken in case of blood donation. So 300 liter means if it was 5.5 liter, उसमें से 300 liters जो है is removed. That means now it is 5.200 milliliter, 5 liter and 200 milliliter. Then the blood pressure will not be enough for blood to flow in the body. Okay, because the heart and the blood vessels, they should be completely filled if the blood has the heart has to exert pressure on the blood. So when the 300 milliliter of blood is given out, so the blood level will fall. This blood level is immediately maintained by adding 300 milliliter of water.
WBC platelets will be added by the bone marrow, and that will also be maintained within a day. Okay, if a person is healthy enough, he can make enough of RBC, WBC platelets as per requirement in a very short period of time. So whatever type of things are there in our body, they are always maintaining between a bracket. Neither it is allowed to go up nor it is allowed to go down. It is always maintained. And that is the beauty of living system. Consider your car, suppose the petrol gets over, will your car will automatically go and fill the petrol? It will go to petrol pump? No. But when you are feeling thirsty, that is when the water level goes below 70% in your body, you get signal. You get a signal first of thirst. If you go and drink water, well and good. If you are lazy enough, you are कौन उठेगा रात में वहाँ भूत है, this and that, and whatever hundreds of reasons may be there, you may not go. In that case, your kidney will be asked to absorb more and more water from the filtrate, and the blood water level will be maintained. If you have got excess of water, it will be given out of the urine. Now, how water comes in excess, that is whenever we are having any metabolic activities and all, we produce a lot of water. And that water may be added into the cytoplasm, and then from there it goes to the blood. So, there is a complicated system, and this complex is very important right from the day one when we were born, day one when we were born till the last day जब हम मर रहे हैं. Continuously it is going on. This thing is well maintained. In a child, water level is maintained, sugar level is maintained, all other hormonal levels are maintained, the light level in the retina is maintained, all the things are well maintained till the last day. And just as this maintenance will be lost, now our system will become disturbed. And then lead to the several abnormalities, maybe some disease, some disorder, or even it may lead to the aging and we may even die. Now, give you some example. चलिए एक example जैसे light का. We already studied about eyes, human eyes, and we also studied the power of accommodation. Power of accommodation. Power of accommodation are of two types. ठीक है? Accommodation are of two types. One is the for distance. That is, our eyes can immediately change its focal length to focus the object of the infinity to the near point of 25 centimeter. Anywhere in between. आप कुछ भी चीज देखिए, 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक कोई भी चीज देखिए, your eyes immediately changes its focus. ठीक है? If you got the manual camera, you will have to rotate and focus the object. Of course, in the automatic camera, that is where the automatic focus is there, where they got some complicated system which was man-made. Otherwise, it is the accommodation which adjusts the focal length of the lens, and it focuses all the objects which are placed so near to the infinity, anywhere in between. Similarly, there is an accommodation for the intensity of light. You are watching MTV. I am just taking an example of MTV. कुछ जरूरी नहीं आप MTV देखिए, कुछ भी देखिए. MTV, some disco is there, where sometimes very bright light is there, and sometimes very dull light, वो पूरा dark है. How your retina is adjusting it to this range of light. एक example देता हूँ real life. In the afternoon session, 3 p.m. show, you want to go to watch on the cinema hall.
ड्यूरिंग समर वेकेशन 16 जून जम के धूप पड़ती है राजस्थान में 16 जून का महीना. You are going to a cinema hall to watch movie at 3 p.m. show. Outside it is so bright and you buy ticket और आना आपके पास पहले मुंबई शो से टिकट बुक करा हुआ आप फट से गए और जाकर के when you want to search for your seat, no sooner you enter in the cinema hall you find perfect dark. And when you are searching your seat, you are slipping into someone's feet, or you are falling this side, you are colliding in this side and all. By the time you reach, 5 different people will comment to you. Time पे आते नहीं है, पैर पे पैर, अबे भाई देख के चल, पैर है मेरा, this and that. So many comments you will find. Whereas the people who are sitting there, they can see everything. Now you sit there for 5 minutes or 2 minutes. After 2 minutes, you can see everything in the cinema hall with that dim light, which is reflecting from the screen. 2 minutes पहले, when you came from outside, you could not see anything in the cinema hall beside the screen. And after 2 minutes, you can see even who is sitting your neighbor, what color dress he is wearing or she is wearing, and all. Rather ये करते हैं आधे टाइम तो पिक्चर हॉल में स्क्रीन पे काम इधर उधर ज़्यादा देखते, कोई पहचान वाला तो नहीं. तो in that dull light also we can see. Now what makes you see in the dull light, in the poor intensity and the rich intensity? Bright light and poor light. Consider another example. रात के 9 बजे 9 p.m. or other 9 p.m. and you are watching some show on the TV and suddenly power fails and to your hard luck your inverter is also not working. Now you are able to see nothing in your room. आपको कुछ भी नहीं दिख रहा. If that moment you get up and look for candle, मोबाइल भी नहीं है सो मान लीजिए आपके पास, और your mobile is lying on the front table and no sooner you want to get up, आपके घर में जो सबसे experienced people होंगे ना दादाजी, he'll say wait for a minute, otherwise you will hit someone or you will fall. 1 minute बाद क्या होता है? After a minute or two you are able to see in the room even with the reflected light from outside or whatever minimum light which is there. वो जो कैंडल वो what do you call that सैंड स्टिक जो अगरबत्ती आपने लगा रखी है और जो कछुआ जला रखा है वो उस लाइट से भी आपको सब कुछ नजर आता है. इन द ओल्डन टाइम पीपल यूज्ड टू ट्रैवल इन द डार्क यूजिंग one beedi or cigarette. The light of the one beedi was enough to see them the pathways. वो जब पगडंडियों में होके जाते थे, and they could even notice the snakes and other animals, stones and other things kept on the road. Why? Because when we are in the dull light and when we are in the bright light, our eyes accommodate accordingly. Only a certain amount of light is allowed to fall on the retina so that the retina will not damage. Now how it is done? We have studied about the pupil in class 10. Pupil is the small opening in front of the lens. Now pupil has got two types of muscles, the circular muscles and the longitudinal muscles. ये किसी की when we are in the bright light, more light will fall onto the retina and the retina may get damaged. So what happens? The circular muscle contracts and the retina, the pupil becomes small, and it allows only a certain amount of light to fall on the retina. When you are watching TV at 9 p.m. TV was bright enough, more light was coming, the pupil contracted, छोटी हो गई, and it was letting less amount of light to. Now suddenly the power goes and it all becomes dark.
वहाँ पे पहले आपको मिल रही थी जितनी भी लाइट इज मेजर, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर इन लक्स, ठीक है। तो जो भी आपको जितना भी ब्राइटनेस मिल रहा था उसमें आपकी लाइट की pupil is contracted least so that a certain amount of light only can enter in your eye. Now what happens? In the room there is only one sensitive. वो एक अगरबत्ती, दो अगरबत्ती आपने जला रखी है भगवान जी की, शाम को पूजा में जलाई थी, जल के तीसरी रह गई अभी। तो वो जो छोटी सी लाइट है, with that the surrounding which was getting lighted, उसका भी आपको छोटा सा पोर्शन मिल रहा है क्या। Say for example, this pupil is cutting 90% light and only allowing 10% light. तो वो जो sensitive जल रही है उसकी light में भी 10% only will enter in your eyes. And with the 10% of that bare minimum light, what will be able to see? Nothing. And soon your eyes realize this कि तो intensity की कमी है. And then the longitudinal muscles start contracting and they start pulling the pupil outside. And your pupil opens this much, letting bare minimum light which is present in the room to enter in your eyes so that you will be able to see something. फिर आपको वो जो अगरबत्ती की रोशनी है उसी में बहुत कुछ दिखता है. You are able to see many things, at least the things kept in around. Of course you will not be able to make out the colors because आपके cone cells काम नहीं करेंगे. Cone cells require more of intensity, but your rod cells will make you feel that what all things are there. Okay, so this is how it is allowing only certain. तो ये भी तो एक accommodation है, ये भी तो एक homeostasis है. That is your retina should get only a certain amount of light. If light intensity is more, the pupil constricts. If light intensity is less, pupil expands and retina will not be damaged. And this is what happens when कोई आपकी आँख में फ्लैश मार देता है तो आपको 1-2 सेकंड तक कुछ दिखता ही नहीं, और यू फाइंड सम स्पॉट्स ऑन योर आईज एंड आपको केवल वो धब्बे दिखते हैं फ्लैश लाइट. व्हाई? बिकॉज दिस टेक ए बिग टाइम, दिस एडजस्टमेंट टेक ए बिग टाइम. Even in the unconscious people, this particular function is continued. जब आदमी बेहोश हो जाता है ना, आप चांटे मार दीजिए, उसको उठा के पानी में पटक दीजिए, आप उसके इंजेक्शन घुसा दीजिए, you can even cut operate the body, he don't come to know. But in that case also, if you put the light onto the retina with the help of a torch, its pupil will constrict. So it is one of the vital signs to find out whether the person is alive or dead. जो अच्छे हट्टे कट्टे मोटे लोग होते हैं जिनकी पल्स फील नहीं हो रही है, जिनका ब्रीदिंग रेट इतना कम है कि यू कांट इवन फील, द बेस्ट वे इज टू पुट लाइट ऑन द आईज एंड यू सी वेदर द प्यूपिल इज कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग और नॉट. बट वहाँ पे प्रॉब्लम भी है. अगर रोड साइड में कोई आदमी बेहोश हो गया है तो वहाँ आप सोचो कि मैं राइट, वहाँ पहले ही बहुत सारी लाइट है, वहाँ आपकी टॉर्च की लाइट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, द प्यूपिल इज ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड टू द मिनिमम. एंड मेनी टाइम पीपल जो है वो कह देते हैं साथ ही तुम मर गया, फिर उसका क्रियाक्रम करने के लिए लेके जा रहे होता है और अचानक उठ के बैठ जाता है वो, बिकॉज इट वॉज योर मिस्टेक. ब्राइट लाइट के अंदर जब आदमी कोई बेहोश हुआ होगा तो वहाँ तो पहली बहुत लाइट आ रही है रोड साइड में, यू हैव टू टेक हिम टू इन अ शेडी रीजन और यू हैव टू ब्रिंग इट टू सम रूम एंड देन यू कैन पुट लाइट. ठीक है, तो वो अलग चीज़ है, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेट होना चाहिए. अगर अधूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, what happens when the children know what they are asked, forced to study, what they do, they just open a page and start reading. They don't know what was there in the previous page. उसका कंटिन्यूएशन है, वो तो आपने पढ़ा ही नहीं, आप तो आगे आगे का पढ़ रहे हैं. तो उससे ऐसे केस के अंदर क्या सब लफड़े हो जाते हैं, जहाँ हमारा नॉलेज अधूरा रह जाता है. सो इट इज़ नेसेसरी दैट वी शुड स्टडी फुल. पूरा टॉपिक पढ़ना है आपको शुरू से लास्ट तक. ऐसा नहीं है बीच में कोई भी पन्ना खोल लिया और पढ़ने बैठ गया. ठीक है, इन सच ए केस यू मे कमिट मिस्टेक, ब्लंडरस मिस्टेक्स. ठीक है, तो वो जो अधूरे डॉक्टर होते हैं ना, वो कई बार ऐसे काम करते हैं. आपने देखे होंगे दैट डॉक्टर वट दैट मूवी हो गया दैट जो आई थी, जो मतलब सारे टाइम घूमते फिरते रहते हो, फिल्में देखते रहते हो, डांस करते रहते हो, दारू पीते रहते हो, उनको क्या उनका नॉलेज ऐसे है.
Anyway, this is Kabir Singh. Okay, तो ये आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा है. अनदर एग्जाम्पल आई टेक ब्लड शुगर लेवल. मैंने पढ़ा रखा है आपको 10th क्लास में. जस्ट रिपीट ऑल दीस थिंग्स आर ऑलरेडी डन इन क्लास. बहुत सारे एग्जाम्पल है इन योर लाइफ. यू हैव टू जस्ट सी. ओके, आपने मान लीजिए जलेबी दूध खाई है सुबह. जलेबी प्लस मिल्क इन ब्रेकफास्ट. ना जलेबी तो शुगर है, चाशनी है, जम के चाशनी है, खूब बढ़िया वाली चाशनी है. सो व्हाट विल हैपन आफ्टर ब्रेकफास्ट, योर ब्लड शुगर लेवल विल शूट. जो होना कितना चाहिए था 80 मिलीग्राम से लेकर के 120 मिलीग्राम. नाउ इट इज शूटेड टू अबाउट 160 milligram. What has to be done? Immediately an enzyme called insulin will be secreted. ठीक है, 160 मिलीग्राम होते के साथ ही क्या होगा? इंसुलिन will be secreted. Insulin. And insulin will store the excess of sugar into glycogen. ठीक है, अब मान लीजिए आपने दिन में खाना नहीं खाया एंड यू हैव गॉन फॉर ट्रैकिंग. पहाड़ पे चढ़ गया, ठीक है. अब आपको कितना भी भूख लगे तो नीचे ही आना पड़ेगा. पहाड़ पर तो खाना आने वाला नहीं है. इवन इफ यू आस्क अमेज़न टू डिलीवर, वो भी नहीं करेगा. लॉन्ग बॉर्न अभी इंडिया में नहीं आया, ठीक है. तो क्या होगा कि एक्सेस ऑफ शुगर जो है वो आपका कम होकर के कितना हो गया? मान लीजिए 90 हो गया. फिर और कम होकर के 80 मिलीग्राम हो गया. अब इससे नीचे जाएंगे तो आपको बेहोश हो जाएंगे, आप चक्कर आ जाएंगे, फिर तो अपना भी पहुंच जाएंगे नीचे. यू जस्ट वंस फॉल, फिर तो नीचे ही आना. बट डोंट डू दैट. यहाँ पे क्या हो रहा है? योर ग्लाइकोजन विल बी ब्रोकन इनटू ग्लूकोज अगेन विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम दैट इज अ हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागॉन. Another hormone called glucagon, which breaks the excess of glycogen into glucose and maintain the blood sugar level. बाल्यकाल से आज तक आप कितनी बार गिरे हैं? Did you go to hospital to get the plastic surgery every time? जब नई स्किन आती है तो कलर इज समथिंग एल्स. सून आफ्टर सम टाइम द कलर ऑफ द स्किन अगेन बिकम टू द सेम नॉर्मल कलर. सो मैं तो बहुत ही शैतान बच्चा था. जैसे टाइम इज डिफरेंट नाउ. दिस पीपल आर सिटिंग एट होम एंड प्लेइंग विथ मोबाइल. इन आवर टाइम मोबाइल तो छोड़िए, रेडियो था एक घर में. सो वी हैड टू गो आउट ओनली टू प्ले. सो क्या खेलते थे हम? सितोलिया खेल लो, गुलाम दाल खेल लो, भागम भाग खेल लो, पहाड़ पे चढ़ के आओ, देखो कितना टाइम है. तो दैट काइंड ऑफ एंड वी यूज्ड टू फॉल. सो आई फेल नंबर ऑफ टाइम एंड प्रैक्टिकली ऑल माय नट्स एंड बोल्ट्स आर. तो आई गॉट नंबर ऑफ प्लेसेस स्क्रैचेस. बट टुडे यू कांट मेक आउट एनी ऑफ दोज स्क्रैच. वेयर दोज स्क्रैच मार्क्स गॉन? दे रिपेयर देयर ओन. रिपेयरिंग इज बॉडीज ओन फंक्शन. जब ब्लड लूज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, बाहर जा रहा है ब्लड, that is the blood clotting is body's own function to prevent the loss of excess blood. The repairing, that is the skin healing or wound healing, is again body's own function. आप मेडिसिन लगा के wound healing नहीं कर रहे हैं. मेडिसिन लगा के you are only preventing the microorganism which is affecting their part. and अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? that will be क्या कहते हैं, infected, and then you will get other type of complication. So we are using medicine only to kill those microorganisms which are attacking on those wounds. But the wound healing is body's own process. And then new skin will come. वो white सी कलर की रहेगी. The white color skin will soon, थोड़े टाइम में वापस से वो कौन से कलर की हो जाएगी? योर स्किन कलर, ओरिजिनल स्किन कलर. नाउ सो मेनी प्लेसेस आई गॉट स्क्रैचेस बट आई कांट मेक आउट व्हाई. वो बॉडी का होम्योस्टेसिस प्रोसेस है, इसने सबको सील कर दिया, हील कर दिया और सेम कलर कर दिया. आपकी कार में करके देखें ना एक स्क्रैच, एक बढ़िया सा
एक बढ़िया सा पत्थर लेकर के और कार पर लगा के देखो, क्या उसका कलर अपने आप से चेंज हो जाता है? क्या उसका डेंटिंग अपने आप से हील हो जाता है? हाउ इट इज सो दैट यू आर एबल टू गेट ऑल दोज थिंग्स एंड नॉट इन केस ऑफ कार्स। ठीक है, तो दैट इज द होम्योस्टेसिस। यू कैन सी होम्योस्टेसिस इन नंबर ऑफ प्लेसेस, थायरोक्सिन हार्मोन which is secreted from your thyroid gland, the information comes from the pituitary, ठीक है, and when this thyroid gland is secreted and the blood thyroid level is maintained, जब वो blood thyroid level ज़्यादा हो जाएगा, that same blood which is having thyroid hormone, thyroxine hormone in it, when it goes to the hypothalamus, it comes to know, अरे thyroxine level is going beyond the tolerable level, and it will automatically stop the thyroid secreting hormone to secrete more thyroxine from the pituitary. Sorry, pituitary is thyroid. So the thyroid will start secreting less amount of it. So there is a balance everywhere. May it be water level, may it be sugar level, may it be light level, may it be skin color, may it be sweat, may it be tear, may it कुछ भी चीज़ हो. Body temperature. Take for example, very simple है, वो तो भूल ही गए. Body temperature 37 degrees Celsius. Nowadays you see every office, every building, every shop, every mall, knows that you go वहाँ पे खड़े रहेंगे वो thermal scanner लेकर के, and they will be taking your temperature. What is the body temperature of a normal healthy person? 37 degrees Celsius. 37 डिग्री सेल्सियस से अगर ये ज़्यादा होगा तो क्या होता है? इन दिनों गर्मियाँ हैं, फॉर एग्जाम्पल बाहर का टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस है, अभी तो नहीं है, गर्मी है तो थोड़ा मौसम ठीक ठाक है। 41 डिग्री सेल्सियस, then what will happen? Your body temperature will also go to 41 degrees Celsius and soon you will start sweating. You will start sweating. Go to the chapter number 1 of 9th class science. Sweat क्या करता है? The sweat evaporates and your body cools. Temperature will come back to this level. Winter passing के थोड़ी दिनों बाद the body atmospheric temperature will go as low as 10 degrees Celsius. Your body temperature will also fall. इसके बराबर होगा क्योंकि two system will always maintain themselves. तो आपका body temperature 10 डिग्री हो जाएगा तो मर जाएंगे ना. तो क्या होता है? Your metabolism will increase. Metabolism will increase, your breathing rate will increase, and you will produce more and more heat, so that the body temperature again come back to 37 degrees Celsius. So body is maintaining, it's a very important property of homeostasis. Any one example, two example आप याद कर लीजिए, वैसे आप अपनी जिंदगी में अपनी बॉडी के अंदर देखिए ना कौन सी चीज़ में होम्योस्टेसिस नहीं मिल रही है. Tajmahal, such an important building for our country, which generate revenue like anything. आप 5 साल के लिए छोड़िए, 2 साल के लिए उसका मेंटेनेंस छोड़ दीजिए, 1 साल के लिए छोड़ दीजिए ना. हमारी पब्लिक तो बहुत बढ़िया है, वो तो ताजमहल के ऊपर जगह के लिए जाके दिस प्लस दैट देंगे, वो तो उसके पत्थर भी निकाल के घर में ले जाएंगे और बेशर्मों की जैसे ले जाके वहाँ पे घर के बाहर रख के बोलेंगे ये ताजमहल का पत्थर. ठीक है. सो ऑल पीपल आर ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव. सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट डिस्ट्रक्शन, इन ऑर्डर टू मेंटेन व्हाट वी हैव गॉट द आर्कोलॉजिकल सर्वे, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया विच विल बी टेकिंग केयर ऑफ ताजमहल. और वो ताजमहल की कितनी भी देखभाल की, येट द सिस्टम विल नॉट बी मेंटेन एज द ओरिजिनल ताजमहल इफ इट हैविंग सम प्रॉब्लम. आज भूकंप आ जाता है, देयर इज अ क्रैक्स एंड ऑल, it will not repair its own, but our body does. So these are some of the examples of homeostasis which I explained you. बाकी पढ़ेंगे on Monday. Okay, thank you children.